number 5 of the worksheet. Prove the identity cot x minus cot 2x is identical to cosecant 2x. Okay, so we have to show that cot x minus cot 2x is going to give us the same. It's going to become cosecant 2x. Okay. Now, what is cosecant 2x? Cosecant 2x is 1 upon sine 2x. So you somehow need to show that the left hand side also becomes 1 over sine 2x. अब देखते हैं how is that possible? What is cot x? Cot is 1 upon tan. And similarly, cot 2x would be 1 upon tan 2x. Now, tan is sine upon cos. So 1 over tan is going to be sine x in the denominator, cos x in the numerator. Similarly, minus cos 2x upon sine 2x. Okay. Now we're going to use the double angle identities. We get cos x is still cos x, sine x is still sine x, minus sine 2x is 2 sine x cos x. And cos 2x is what? Cos 2x has 3 identities. I mean, it's equals to either cos square x minus sine square x, or it's equals to 2 cos square x minus 1, or it's equals to 1 minus 2 sine square x. Okay. So, which one do we take here? Let's take this and see what happens. Okay. So, I'm going to take 2 cos square x minus 1. Although, eventually, all of these would lead us to the same answer. किसी में हमें थोड़े steps extra करने पड़ जाएंगे, और कोई होगी जिसमें कम steps करने पड़ जाएंगे. I'm going to take 2 cos square x minus 1. No specific reason. Okay. अच्छा, reason थोड़ा सा specific है कि I'm going to avoid this जिसमें sin भी है और cos भी है. क्योंकि eventually मैंने cancel करना होगा numerator और denominator को, ताकि खाली sin की term आ जाए denominator में. So that's why I'm going to avoid cos square x minus sine square x. So either I would have used the second form or the third form. All right. So now what we'll do, we'll take LCM. LCM is 2 sine x cos x. Okay. So इधर हमने 2 cos x multiply करना होगा. 2 cos x in the denominator as well as in the numerator. So yes, that solves the problem. We get in the numerator, we have 2 cos square x minus 2 cos square x, and then minus minus plus plus. So now the cos square terms gets cancelled, and we have 1 over 2 sine x cos x, which we know is 1 over sine 2x. So I get 1 over sine 2x. And if sine 2x goes up, it can be written as cosecant 2x. So that is what we were supposed to show. Okay, part 2. So that integration of cot x dx equals to that. Okay. So we cannot integrate cot x. कोई हमने formula नहीं सीखा.
However, cot can be written as cos over sine. तो वो कर लेते हैं, मैं इधर ही कर रही हूँ कि cot की जगह मैं लिख रही हूँ cos over sine. चलो next step पे करते हैं. Okay, so that becomes cos x over sin x dx. Okay, pi by 6 and pi by. Okay. अब इंटीग्रेशन का हमने ये रूल पढ़ा है कि if you have a function in the denominator and its derivative in the numerator, then this integrates to ln fx plus c. So we have a function in the denominator, which is sin x. We also have its derivative in the numerator, which is cos x. So this would become ln sin x, and limits are pi by 4 and pi by 6, so we don't need a plus c here. So ln sin pi by 4 minus ln sin pi by 6. Pi से हमें पता चल रहा है कि this is radians, लेकिन अगर कोई डेसिमल वैल्यूज भी होती हैं तब भी हम रेडियंस में रखते हैं. हमेशा आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए अनलेस क्वेश्चन डिग्रीज को मेंशन करे. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन डेरिवेशन, उसमें हमेशा रेडियंस में ही सेटिंग होनी चाहिए अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशंस डिग्रीज. Okay, now solve this. Tell me what we get. What's sin pi by 4 and what's sin pi by 6? क्या है? Sin pi by 4 would be under root 2 upon 2 minus ln sin pi by 6. Okay, but हमने ना आंसर इस फॉर्म में दिखाना है, एल हाफ ln2. तो अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास भी n में हाफ ln2 है. What I'm going to do first is write this as a single power of 2. वो क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में मेरे पास पावर हाफ है और डिनोमिनेटर में 1 है, सो सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर्स, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 पावर माइनस हाफ. सो दिस बिकम्स 2 पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे आ गया माइनस ln 2 पावर माइनस 1. सो इट्स गोइंग टू बी माइनस हाफ ln2 or plus ln2, which becomes half ln2. So we got the required answer in the required form. Okay. I hope you have that in your notes. I'm going to take a look at the next question. Part 3. Part 3 is find the exact value of this, giving your answer in A, L, and B form. All right. Cosecant 2x. Okay. Cosecant 2x की जगह ना, we're going to write this from the first part. Instead of cosecant 2x, we'll integrate this. So integrate cot x minus cot 2x instead, dx.
Limits are the same, pi by 6 and pi by 4. फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये वाला पार्ट आप इधर इंटीग्रेट कर चुके हो और आपका आंसर आया ½ ln2। इसका आंसर यूज कर लेते हैं। इंटीग्रल का साइन स्प्लिट हो जाएगा दोनों पे, cot x पे अलग आ जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन cot 2x dx अलग हो जाएगा। And the limits are the same, pi by 6 to pi by 4. Okay. So the first answer is ½ ln2. माइनस इधर देखते हैं क्या आ रहा है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। So I'm going to solve this part here. Okay. So it's integration from pi by 6 to pi by 4 of cot होता है cos over sine, so cos 2x upon sine 2x dx. Same rule, if you have a function in the denominator plus its derivative in the numerator, then the rule of integration is that this becomes ln fx plus c. Okay, so we have a function in the denominator. Sin 2x का derivative क्या होता है? Cos 2x times 2. तो इधर एक 2 मिसिंग है न्यूमरेटर में, तो वो तो हम खुद ही आराम से ला सकते हैं। If we write 2 here and half here, the job is done. So now we get half ln sin 2x with the limits pi by 4 and pi by 6. So I'm going to take half common and apply the limits ln sin pi by 4. Oh, sorry, यहाँ 2 भी है. So sin 2 pi by 4 minus ln sin 2 pi by 6. So what does that give us? Let me check. ये 1 आ जाता है और ये आ जाता है √3 upon 2. So we get half bracket ln1 minus ln √3 upon 2. ln1 is 0. So this becomes 0. So we have minus half ln square root of 3 upon 2. यहाँ लिख दिया minus half ln square root of 3 upon 2. तो बीच में प्लस साइन आ गया. Negative negative becomes plus. We need to show the answer in a specific form. I think we do. A ln b की फॉर्म में आंसर शो करना है. अब ये कैसे करें? A ln b हाफ कॉमन ले लेते हैं. So we get ln2 plus ln √3 upon 2. Okay. लॉग का एक रूल होता था कि ln ab किसके इक्वल होता है? ln a plus ln b. So यहाँ से इधर चले जाते हैं. We get half and it becomes ln 2 times √3 upon 2, which is just √3. So it's going to be half ln square root of 3. I think ये पावर हाफ बना के भी
आगे करनी होगी. लेट मी जस्ट कंफर्म कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है. ए और बी इंटीजर्स है. गिव योर आंसर इन द फॉर्म. यस, सो देयर शुड बी नो पावर ऑन बी. लेकिन हमारे पास जो एल एन की टर्म आ रही है उसमें एक पावर आ रही है. तो फिर हम एक लॉग का रूल यूज करेंगे कि जो पावर हाफ है ये बेस में चली जाएगी. सो हाफ ln3 power half becomes 1 over 4 ln3. This is the final answer. कोई क्वेश्चंस है तो पूछो प्लीज. चलो अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. Let me just quickly open a new board के थोड़ा ग्लिच करने लगता है. Prove the identity sin square theta cos square theta equals is identical to this. Okay, ये क्या चीज है? Sin square theta cos square theta इसके इक्वल होना चाहिए 1/8 1 minus cos 4 theta. Cos 4 theta तो हमने नहीं पढ़ा था. फिर हमने ये पढ़ा हुआ है cos 2 theta. So just for clarity, what I'm doing is I'm going to write cos 2 theta is equals to three of its cases: cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा. इनमें से कोई एक हमें कहीं ना कहीं यूज करना होगा. cos 2 थीटा. बल्कि अगर ये cos 2 थीटा है तो मुझे कोई बता सकता है कि इससे मैं cos 4 थीटा कैसे बनाऊं. cos 2 थीटा को cos 4 थीटा कैसे बनाऊं. We multiply 2 with it. You change this into 2 theta. You change theta into 2 theta. So this would become cos 4 theta and this would become cos square 2 theta. एंगल को बस डबल कर दो. एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना अंदर. 30 भी हो सकता है हर साइड पे, और 30 का डबल 60 भी हो सकता है. सो द आइडेंटिटी विल स्टिल होल्ड ट्रू नो मैटर व्हाट एंगल यू टेक. ठीक है. थीटा 5 भी हो सकता है तो cos इंटू 2 into 5 विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5, या 5 का डबल 10 भी हो सकता है. So it does not matter what theta is. So if we double it, the identity will still hold true. So theta को ना हम replace कर रहे हैं 2 theta से. So मेरे पास left side पे cos 4 theta आ जाएगा, और राइट साइड पे हर थीटा को रिप्लेस कर देना है 2 थीटा से. 2 cos square 2 theta minus 1, या फिर 1 - 2 sin square 2 theta. अब इनमें से कुछ यूज होगा एट सम पॉइंट डेफिनेटली. ट्राइंग टू फिगर आउट यहाँ से आगे क्या करेंगे. गिव मी अ सेकंड, a couple of seconds. ओके. अच्छा, ओके. साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा
तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है साइन और कॉस का प्रोडक्ट हमने किधर पढ़ा हुआ है, हमने इधर पढ़ा हुआ है। 2 sin θ cos θ जो होता है उसमें साइन और कॉस का प्रोडक्ट आता है, और वो किसके इक्वल होता है, sin 2θ। अब मैं इससे ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई चेंज दिस इनटू sin θ cos θ equals sin 2θ upon 2, and then I'll square both the sides. This side gets squared and all of this side gets squared. So we get sin square theta cos square theta equals sin square 2θ upon 4. Yeah. So this is what I'm going to write here. इसको replace कर रहे हैं sin square 2θ upon 4. क्या है? अच्छा, अब देखो मैंने साइन स्क्वायर 2θ को चेंज कर लेना है cos 4θ में। दैट मीन्स आई हैव टू यूज दिस वन। इससे साइन स्क्वायर 2θ cos 4θ में चेंज होगा, राइट? लेट मी मेक साइन स्क्वायर 2θ द सब्जेक्ट है। So here, if we make sine square 2θ the subject, we get 1 minus cos 4θ upon 2. So I'm going to replace that with this. So अब यहाँ पे आ गया sin square 2θ की जगह लिख लिया 1 minus cos 4θ upon 2, और नीचे 4 भी आ गया। So we get 1 minus cos 4θ upon 8. थिंक यही शो करना था, हाँ यही शो करना। So we've managed to prove that the left hand side is equals to right hand side. ये आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए आपने जो सारी ट्रिग्नोमेट्री P3 में आइडेंटिटीज की है ना, वो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, और याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर गिवन इन द फॉर्मूला शीट। याद हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यू आर मोर कॉन्फिडेंट। अगर आपको ये चीजें याद हो तो आपको जल्दी क्लिक करती हैं चीजें, वरना इफ इन द एग्जाम यू आर सिटिंग एंड ट्राइंग टू फिगर आउट के कौन सा रूल लगेगा और क्या था, तो आई एम प्रीटी श्योर इट वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद अगर थोड़ी बहुत भूली हुई हो तो द फॉर्मूला शीट इज देयर टू टेल यू, बट आपको उनका मकसद और कहाँ यूज हो रही है एंड एवरीथिंग वो पहले से पता होना चाहिए। और पार्ट 2 सेज हेन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो हम उसकी जगह लिखेंगे 1/8 1 minus cos 4θ। जो आइडेंटिटी हमने प्रूव किया वो लिखेंगे, तो इट सेज हेंस राइटिंग 1/8, बल्कि 1/8 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 minus cos 4θ dθ हो गया। इसको भी स्प्लिट करते हैं, 1/8 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन होती है जस्ट x, बट यहाँ पे द वेरिएबल इज थीटा, सो वी राइट थीटा माइनस cos 4θ की इंटीग्रेशन होगी, cos की इंटीग्रेशन होती है sin, so it's going to be sin 4θ, but in the denominator we write 4, and the limits are pi/3 and 0. So अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आंसर आएगा? pi/3 1/8 इधर लिख लिया। फर्स्ट ब्रैकेट वुड बी pi/3 minus sin 4 times pi/3 upon 4 is giving me my negative √3 upon 8. Then a minus sign in between. 0 is 0 and sin 0 is also 0.
So what we get here, 1/8 pi by 3 plus square root of 3 upon it. हाँ ठीक है, यही आंसर है. Answer is pi 24 plus square root of 3 upon 64, which is the same. हो गया ये क्वेश्चन. ठीक, 57 तक. कोई क्वेश्चन हुआ करे तो बीच में पूछ लिया करो. Okay, moving to the next question. By using substitution, x is equals to tan theta, show that integration of this is equals to this. Alright, तो हम पहले हमेशा substitution को दोबारा लिखते हैं और उसको derivate करते हैं. So part 1, you are given that the substitution is x is equals to tan theta. We derivate both sides with respect to the variable on the right, which is theta. So the derivation of tan theta is secant square theta. So dx becomes secant square theta d theta. So I'm going to write this now. Integration 1 minus x is tan theta, so tan square theta upon 1 plus tan square theta whole square, and d theta would be, हमें अगर dx को replace करना है with sin secant square theta d theta. ये पूरा ये बन गया. Okay. अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 3 फॉर्मूला शीट में. लेट मी जस्ट कट पेस्ट दैट. गिव मी अ सेकंड. These 3. So ये अप्लाई हो रही है. 1 plus tan square theta is equals to secant square theta. So यहाँ पे 1 plus tan square theta की जगह I'm going to write secant square theta. So integration 1 minus tan square theta upon denominator में आ गया secant square theta का भी square. So that would be secant 4 theta times secant square theta d theta. So notice के अच्छा अभी तो limits हैं. So never. Okay. So we get secant square theta in the denominator and 1 minus tan square theta in the numerator. And if the d theta is and that. Okay. So हमने ये करना. Okay, we should get this. So now I will split the denominator. 1 upon secant square theta minus tan square theta upon secant square theta d theta. Okay. So एक second. बल्कि मेरे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाता अगर मैं इस tan square theta को रिप्लेस कर लेती यूजिंग द आइडेंटिटी अगेन. इसको सेकंड की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ से भी. सो tan square theta हो गया secant square theta minus. So let's do that.
secant square theta in the denominator, and the numerator would be 1 minus secant square theta minus 1. तो कोई गड़बड़ हो गई है. होल्ड ऑन, लेट मी सी. क्योंकि तो नहीं आ रहा. 1 minus there's a secant square theta and 1 minus tan square theta. I need to get cos 2 theta. Okay, cancel नहीं हो रहा, ऊपर 2 बनता है. So we get 2 minus secant square theta in the numerator and just secant square theta in the denominator. That is 1 minus secant square theta plus. Okay. फिर भी I think splitting की जरूरत पड़ ही रही है. So let's split the denominator. Okay, so we get integration of 2 upon secant square theta. और यहाँ पे आ रहा है -1. So if I send secant up, I get 2. secant ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos square theta -1 d theta. और अब आइडेंटिटी बन गई. ये cos 2 theta के इक्वल होता है. If you remember, one of the 3 identities for cos 2 theta is 2 cos square theta -1. यूजली मैं इसको मिडिल में लिखती हूँ. वो जो 3 आइडेंटिटीज होती हैं इसमें मिडिल वाला ये होता है. So it's going to be integration of cos 2 theta d theta. That took a while. Okay, so we've shown that if we use this substitution, this integral changes into integration of cos 2 theta d theta. अब next part में कह रहे हैं, hence find the value of the integration of this between 1 to 0. अब जो ये 1 और 0 है ना, ये है x की लिमिट्स. आप ये 1 और 0 cos 2 theta d theta के साथ नहीं लगा सकते. ठीक है, आपने लिखना है cos 2 theta d theta, क्योंकि we know that this changes into cos 2 theta d 2 theta after using the substitution. लेकिन लिमिट्स हम बिल्कुल भी 0 और 1 नहीं यूज करेंगे. लिमिट्स चेंज करेंगे. cos 2 theta d theta. ओके, अब जब x 1 है और x जब 0 है तो हमने देखना है थीटा क्या है. तो हम ये जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है इसको यूज कर देते हैं. तो x tan theta के इक्वल है. So we're going to write 1 is equals to tan theta and 0 is equals to tan theta. तो tan इनवर्स लेंगे, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा और थीटा, और यहाँ थीटा आ जाएगा π/4. So the limits are 0 to π/4. Okay, and the function is cos 2 theta d theta. अब इसकी कर लेते हैं इंटीग्रेशन. सो इसकी इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन होती है sin, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा. So we get sin 2 theta upon 2. And the limits are π/4 and 0. Let's apply the limits. Sin 2 times π/4 upon 2 minus sin 2 times 0 upon 2. ये तो सीधा सीधा 0 हो गया. और sin π/4 upon 2 करना है. Sin π/2 upon 2.
ये बन जाता है हाफ, ये 1 आ जाता है, 1 जाता है, एंड वी गेट हाफ एज अ पॉइंट। चलो, मीटिंग इज ऑल्सो अबाउट टू एंड। होमवर्क में आप लोग करोगे क्वेश्चन 8, 9 भी कर लो, चलो ट्राई 9, 8 and 9। See you guys tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.